तो स्टूडेंट्स आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। जो दो टाइप्स हैं एडसॉर्प्शन के, उनके बीच डिफरेंस करेंगे हम आज। फिजिकल एडसॉर्प्शन को क्या कहते हैं? साइसॉर्प्शन भी कह देते हैं या फिर वैंडरवॉल एडसॉर्प्शन भी कहते हैं। और केमिकल एडसॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन या फिर लैंगमोर एडसॉर्प्शन भी बोला जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इनमें देखिए, फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। तो लिख लीजिए, देयर इज weak van der Waal forces of attraction between adsorbate and adsorbent। और केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। There is formation of a chemical bond between adsorbate and adsorbent। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर एक वीक वैंडरवॉल फोर्सेस है, कोई बॉन्ड नहीं है। एडसॉर्बेट मान लीजिए एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेट इसके सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ है? वैंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, अब वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो एडसॉर्बेट वापस है, अगर वो गैस है तो वापस वो क्या हो जाएगा? वहां से उड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा वहां से। तो लिख लीजिए, दिस occurs only at low temperature, only at a low temperature। और इसमें क्या है? ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। केमिसॉर्प्शन फर्स्टली increases with temperature, but then decreases at high temperature। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फिर बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता है ना, केमिकल बॉन्ड जो बने वो भी ब्रेक हो सकता है हाई टेम्परेचर पे। थर्ड आप पॉइंट लिख सकते हो, फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है, कोई भी गैस किसी भी सॉलिड पे आके एडसॉर्ब हो सकती है। नॉन स्पेसिफिक है, कोई फिक्स क्राइटेरिया इसका नहीं है। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, कि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे आके एडसॉर्ब हो सकती है। इसमें क्राइटेरिया फिक्स है, वही गैस एक सॉलिड पे आएगी जो उस सॉलिड के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाएगी। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ bond formation between adsorbate and adsorbent। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच अगर केमिकल बॉन्ड बनने के चांस हैं, तभी केमिकल एडसॉर्प्शन होगा। 3 पॉइंट्स क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट,
हमने ये पढ़ा था कि एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। अब इसके अंदर जब बॉन्ड बन ही नहीं रहा, देखिए कोई भी दो एटम अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो इसका मतलब वो एनर्जी लॉस करते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, अब अगर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लीजिए एडसॉर्बेंट है और उसके सरफेस पे कौन आ रहा है, एडसॉर्बेंट आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा होगा कि वो एनर्जी लॉस करके उसके सरफेस पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, लेकिन किस फोर्स के साथ है फिजिकल एडसॉर्प्शन में, वैन डर वाल्स फोर्स के साथ। तो इसका मतलब ये वीक फोर्स है, तो एनर्जी रिलीज होने वाली भी क्या है, बहुत ही कम है। तो लिख लीजिए देयर इज लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। आपको पढ़ाया था मैंने हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन ए गैस इज एडसॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट। 1 ग्राम एडसॉर्बेंट पे जब गैस आके एडसॉर्ब होती थी तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है उसको हम हीट ऑफ एडसॉर्प्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, एक ही बात है। बहुत ही कम होगी, कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 20 to 40 किलो जूल पर मोल ये हो सकती है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, देयर इज लार्ज एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। कितनी होती है इसमें, अप्रोक्सीमेट 100 to 400 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इसकी लो होती है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है, एंड दे कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसमें तो केमिकल बॉन्ड बनना ही नहीं है। अब केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनना तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ही नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट होता है। देयर इज, ये लिख दो, एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो। और इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी, क्योंकि भाई इसमें एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ज्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट, जब एक एडसॉर्बेंट के ऊपर गैस की एक लेयर बन जाती है वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से, तो उसके ऊपर एक लेयर और बन सकती है, उससे ऊपर एक लेयर और बन सकती है, तो ये मल्टी मोलिकुलर इन नेचर होता है। इट इज, यहां से लिख लीजिए, मल्टी मोलिकुलर लेयर of gases is formed on the surface of adsorbent। और एडसॉर्बेंट क्या होना चाहिए, अगर मैंने गैस लिख दिया तो सॉलिड। 6 पॉइंट इसमें, अगर एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया एक लेयर के साथ तो एडसॉर्बेंट की सारी साइट ब्लॉक हो चुकी है, और जो एडसॉर्बेंट की लेयर है वो अपने ऊपर दूसरी लेयर को नहीं आने देगी। इट इज, सीधा लिख लेते हैं, यूनिमोलिक्यूलर लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट इज फॉर्म्ड। यूनिमोलिक्यूलर लेयर क्या होगी, इसके अंदर बनती है केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर। 7th पॉइंट देखिए, अगर एक लेयर सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स के साथ जुड़ी हुई है एडसॉर्बेंट की ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, और आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करते हो तो वो वापस भी उड़ सकती है, वहां से लेयर वापस है क्या हो सकती है, वहां से एस्केप हो सकती है, हट सकती है। मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। तो लिख लीजिए, इट इज
reversible in nature, that is the layer of adsorbate can be easily removed. क्लियर है, वहां से रिमूव हो सकती है, लेकिन अगर एक बार केमिकल बॉन्ड बना, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ये एक कार्बन का ब्लॉक है, ठीक है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कोयला हो सकता है, कोल का एग्जांपल है ये। जैसे ही इसके सरफेस पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, O2 इसके सरफेस पे आई, और इसको क्या मिला, थोड़ा सा इग्निशन मिला। इग्निशन मतलब थोड़ा सा इसको बर्न किया गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि बर्न तो करना पड़ेगा, क्या बर्न है, केमिकल बॉन्ड। और बर्न करना मैंने आपको समझाया था एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में, कि केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो आपको रिएक्शन को इग्निशन करवाना पड़ेगा, स्टार्टिंग करवानी पड़ेगी रिएक्शन की। एक्टिवेशन एनर्जी है वो जो आप स्टार्टिंग करवा रहे हैं, जब इस कोयले को थोड़ा सा बर्न करेंगे, वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, कोयले के लिए, कार्बन के मॉलिक्यूल्स के लिए, कार्बन के एटम्स के लिए, वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको बर्न करके। वो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, और जब यहां से रिलीज होगा तो किस फॉर्म में रिलीज होगा, CO2, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो CO। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो CO, अदरवाइज CO2। O2 नहीं रिमूव होगा, मतलब यहां तो क्या था, एक सॉलिड एडसोर्बेंट के ऊपर अगर गैस की एक लेयर है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर हाई कर दोगे, ये गैस की लेयर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, खत्म। जो गैस आई थी वही गई, लेकिन इसमें आया कौन था, ऑक्सीजन, गया कौन है, CO2। इसका मतलब ये क्या है, अगर ये रिवर्सिबल है तो ये इरिवर्सिबल है। लिख लीजिए, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इरिवर्सिबल है, ये एग्जांपल भी लिख सकते हो जो मैंने आपको लिखवाया। और कोई पॉइंट बताओ मुझे, और कोई लगे आपको कि कोई पॉइंट, सरफेस एरिया दोनों में ही ग्रेटर होना चाहिए। देखो वो डिफरेंस में नहीं लिख सकते, सरफेस एरिया ऑफ एडसोर्बेंट, इसमें भी ग्रेटर तो फिजिकल एडसॉर्प्शन ज्यादा, इसमें भी अगर सरफेस एरिया ऑफ एडसोर्बेंट ज्यादा तो केमिकल एडसॉर्प्शन भी ज्यादा। क्या होता है, कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, उसको फाइनली डिवाइड कर दो, पाउडर में कन्वर्ट कर दो, उसके सरफेस को रफ बना दो, छोटे छोटे कट लगा दो उसके सरफेस में, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और कोई पॉइंट बताओ अगर याद हो आपको, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में आप ये 7 पॉइंट्स लिख देना, क्लियर है, 7 पॉइंट्स लिख देना आप। इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हो, इसके अंदर भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। इसके अंदर तो वही एग्जांपल है कि जो O2 है, अगर वो केमिसोडोरी है, लिख लेना, O2 इज केमिसोड ऑन सरफेस ऑफ कार्बन। कार्बन के ब्रैकेट में ये चीज लिख लेना, इग्निशन बाय बर्निंग, देन CO और CO2 इज प्रोड्यूस्ड। तो आपने ये इसका एग्जांपल है 7 पॉइंट का, जरूर लिखना है, तो 7 पॉइंट कर लेना, बहुत है। सरफेस एरिया वाला मत करना, मेन पॉइंट सारे आ चुके हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन में। ये यूनिमोलिकुलर होता है या मल्टीमोलिकुलर होता है, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। इसकी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन वेरी लो, इसकी वेरी हाई, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है। इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए नहीं, वेरी लो, और इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, ये टेम्परेचर के साथ फर्स्टली इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन। यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एडसोर्बेंट है हमारा सॉलिड प्लेटिनम, प्लेटिनम का एग्जांपल एडसोर्बेंट ले रहे हैं,
और एडसोर्बेट है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसके अंदर पहले लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन। इफ वी टेक H2 gas as adsorbate and platinum as adsorbent, then H2 gas firstly attracted towards surface of प्लेटिनम। पहले तो प्लेटिनम के सरफेस की तरफ आएगी, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन। भाई केमिकल एडसॉर्प्शन होने से पहले फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, पहले वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, उसके सरफेस पे आएगा, फिर बॉन्ड बनेगा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज, बताया हुआ आपको निकल के केस में, फ्री वैलेंसीज और साइट्स ऑन सरफेस ऑफ प्लेटिनम। देन H2 is chemisorbed by forming chemical bond with platinum। देखिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें देखिए कितनी वैलेंसीज अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस आ रही है और क्या होगा, फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन, अब फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा तो H2 गैस किसकी तरफ आएगी, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। इस तरीके से उसके सरफेस की तरफ अप्रोच होगी, एरो लगानी है आपने। और जैसे ही फिजिकल एडसॉर्प्शन हो जाएगा एक बार, फिर क्या होगा, इनके बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, H और H के, और प्लेटिनम के साथ इसका बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और ये न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, लास्ट स्टेप के अंदर केमिकल एडसॉर्प्शन हो जाएगा। लास्ट स्टेप के अंदर केमिकल एडसॉर्प्शन हो जाएगा, प्लेटिनम ये बॉन्ड कंप्लीट बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। और बाकी इसकी वैलेंसी क्या है, बाकी इसकी साइट क्या है, वैकेंट। और ये मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको पीसीस के अंदर डिवाइड कर लें तो नंबर ऑफ वैलेंसीज, मान लो इसको ब्रेक कर देते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसीज कितनी बन गई थी, 12। यहां कितनी है, 8। नंबर ऑफ फ्री साइट, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले H2 गैस अप्रोच होगी इसकी तरफ, या अपने एरो से दिखाना फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिर इसके बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, इसके साथ बनना शुरू हो जाएगा, ये होगा केमिकल एडसॉर्प्शन। और फाइनली ये आपका कंपाउंड बन जाएगा जिसमें H2 गैस एडसॉर्ब होती हुई दिख रही है किसके सरफेस पे, प्लेटिनम पे। ये था मैकेनिज्म आपका केमिकल एडसॉर्प्शन का। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन या हीट ऑफ एडसॉर्प्शन वेरी लो है, और केमिकल एडसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन के अंदर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन वेरी हाई है। तो उसका रीजन क्या लिख के आओगे, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में क्या प्रेजेंट है,
वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, इसका मतलब उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज है वो वेरी लो है। और केमिसॉर्प्शन के अंदर एडसोर्बेंट और एडसोर्बेंट के बीच में क्या प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि ज्यादा स्टेबिलिटी गेन हुई है। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा गेन हुई है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। देखिए अगर हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर ज्यादा होती है तो एनर्जी किसके अंदर रिलीज होगी, ज्यादा, केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर। अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब उतना ही ज्यादा हीट ऑफ एडसॉर्प्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है। एक क्वेश्चन ये था कि एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, ये वही कंसेप्ट लगाना आपने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करवा दिया गया आपको। और एडसॉर्प्शन से एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है, देखिए गैस मॉलिक्यूल जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे एडसॉर्प्शन पे एक जगह पे आके एक लेयर की फॉर्म में टिकेंगे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हमेशा ही एडसॉर्प्शन में नेगेटिव होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने जरूर ध्यान रखने हैं और ये था आपका इसी के साथ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखो, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक ऐसे कर्व की बात करने वाले हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया। देखिए भाई हम एडसॉर्बेंट लेंगे एक सॉलिड, एडसॉर्बेंट लेंगे गैस, गैस को सॉलिड के सरफेस पे लेके आना है। अगर हम टेम्परेचर रखें लो और प्रेशर कर दें हाई तो गैस ज्यादा एडसॉर्ब होगी। अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब ऑन दी सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट क्या होगा, हाई होगा। इसी को ही हम क्या कहेंगे, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब ये हमें क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एडसॉर्बेंट। तो लिख लीजिए पहले, इट रिप्रेजेंट्स इफेक्ट ऑफ pressure on extent या फिर amount of adsorption of a gas on a solid adsorbent। सॉलिड एडसॉर्बेंट के सरफेस पे कितनी गैस आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो हम यहां पे सबसे पहले तो सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट के 1 ग्राम, पर ग्राम का मतलब है 1 ग्राम, 1 ग्राम एडसॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ग्रेटर दी, नेक्स्ट लाइन है, ग्रेटर दी स्पेसिफिक सरफेस एरिया then higher will be extent of adsorption, या अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करते हैं, पाउडर फॉर्म में ले लो उसको, फाइनली डिवाइड कर दो, सरफेस को रफ कर दो। अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं, सपोज x जो है वो है अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब, मतलब एडसॉर्बेट का अमाउंट, एडसॉर्बेट का, और m मान लेते हैं मास ऑफ, और ये अमाउंट किस में होगा, मास में होगा भाई, अमाउंट की जगह मास भी लिख लो ब्रैकेट में, मास ऑफ एडसॉर्बेंट
और अगर उस मास को आप 1 ग्राम कर देते हो तो वर्ड क्या आएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो एरिया उसने प्रोवाइड किया है। तो x/m क्या होगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कि m था मास ऑफ एडजॉर्बेंट, उसके ऊपर कितना मास गैस का एडजॉर्ब हुआ, x/m अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कह दो या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कह दो, एक ही बात। तो अब जब हमने कर्व ड्रॉ किया x/m वर्सेस प्रेशर, द कर्व ऑफ x/m versus pressure at constant temperature is called Freundlich adsorption isotherm। उसको हम क्या कहते हैं, Freundlich adsorption है isotherm। और वो हमें मिला क्या, वो जो हमें कर्व मिला था वो कैसा मिला था, इस तरफ x/m, इस तरफ प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर है, 0 प्रेशर, तो अमाउंट ऑफ गैस नहीं होगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। जिस पॉइंट पे, जिस प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोला जाएगा इसको, PS मतलब सैचुरेशन प्रेशर। इसके बाद जो एडजॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब जितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, मतलब क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर इस केस में आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। अब इसके 3 फेज बनाने, आपको 3 पार्ट बनाने हैं। यहां तक क्या है, एट लो प्रेशर, यहां तक देखो, इस तरीके से इसको रिजेंबल करना है, इधर ग्राफ देखना आता होगा। इधर अगर करें यहां तक प्रेशर बहुत कम है, तो यहां पे जो एक्सटेंट है x/m, x बाय स्मॉल m आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितना प्रेशर ज्यादा उतना ज्यादा अमाउंट। एक पोर्शन होगा हमारा यहां तक, यहां से लेके यहां तक। पहले इसकी बात करते हैं, ये क्या है, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होने वाला है, जो एक्सटेंट है x/m, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, प्रेशर की पावर 0। और यहां पे है मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर इसमें जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की पावर 1/n, 1/n। n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1, 2 ऐसे हो सकती है। ओके, तो देखिए क्या बना यहां पे, अगर हम इसको मैथमेटिकली करें, मैथमेटिकली एट लो प्रेशर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P मतलब Kp, ठीक। और अगर हम बात करें हाई प्रेशर की, K यहां पे कांस्टेंट है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P की पावर 0, मतलब ओनली क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो x/m क्या आया हमारे पास,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n, वेयर n क्या क्या होगा 0 to 1, n 0 to 1 के बीच में होगा, 1/n कुछ अलग होगा भाई। तो 1/n क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूं तो 1/n की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटिव, और अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1, तो 1/n की वैल्यू हो सकती है 1 to इन्फिनिटिव, लेकिन n की वैल्यू है 0 to 1। आप क्या करो, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दो, कांस्टेंट आ जाएगा यहां पे सिंपल, वेयर k is constant of proportionality, taking log on both sides, दोनों साइड अगर हम लॉग लेते हैं, और लॉग आपने कौन सा लेना है नेचुरल, तो क्या बनेगा लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k इंटू पी की पावर 1/n, फॉर्मूला बन जाएगा log m इंटू log n, log m प्लस log n, log के साथ कोई क्वांटिटी हो और उसकी पावर कहां जाती होती है आगे, प्लस 1/n log p। अब आप इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 2.303 2.303, इधर कॉमन आया इधर भी है, कैंसिल, क्या बनेगा log x/n इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। अब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, कर्व ड्रॉ करना चाहते हो, किस किस में, log x/m और log p में, यह डिफरेंट है भाई, वो x/m और p का था जो हायर प्रेशर पे जाके कांस्टेंट हो रहा था, इसको हमने क्या माना y, इसको x के साथ m प्लस c, किसकी इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की, ओरिजिन से पास है नहीं होगी, इंटरसेप्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, और स्लोप हम लिख देंगे 1/n, ये इंटरसेप्ट यहां से लेके यहां तक इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका log k। अरे ये k वो रेट कांस्टेंट वाला नहीं है जो आप करते थे उसमें केमिकल काइनेटिक्स में, ये डिफरेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये आपको गिवन होगा। तो अगर log x/m और log p का कर्व बनाते हो तो ये बनेगा, x/m और p का कर्व बनाते हो तो वो जो पहले अपन ने बनाया था ये प्रेशर पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। देखो अब लिमिटेशन देखो इसकी, ये हाई प्रेशर पे जाके क्या हो रहा था, x/m जो था हाई प्रेशर पे जाके डिपेंड ही नहीं कर रहा था, डिपेंड नहीं करेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि कर्व और लीनियर सा है, डेविएशन शो कर सकता है हाई प्रेशर पे। इसका मतलब ये कर्व सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, एप्लीकेबल है मॉडरेट रेंज ऑफ प्रेशर पे, तो लिख लेना इट इज वैलिड ओनली फॉर moderate range of pressure, moderate range of pressure के लिए वैलिड है, the curve show deviation at very high pressure, हाई प्रेशर पे वो डेविएशन शो कर देता है, इसीलिए ये किस पे वैलिड है, सिर्फ मॉडरेट रेंज पे, और ये इसकी लिमिटेशन है। क्लियर है? तो आपने आज ये दो टॉपिक करने हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, उसके बाद मैंने आपको करवाया मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन, और फिर हमने पढ़ा फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब एक ऐसा कर्व जो ड्रॉ किया जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे।
धन्यवाद. Adsorption of gases on solids can be of two types: physical adsorption and chemical adsorption. Let us discuss physical adsorption first. When gas molecules or atoms are held to the surface of a solid by weak van der Waals forces, then it is called physical adsorption. Physical adsorption is also known as physisorption or van der Waals adsorption. Let's look at an example. In the adsorption of dihydrogen on the surface of finely divided platinum, hydrogen molecules are first attracted towards the surface of platinum by weak van der Waals forces, and then adsorbed due to the presence of unbalanced attractive forces or free valencies on the metal surface. This is physical adsorption. Here, platinum is the adsorbent and dihydrogen molecules the adsorbate. Note that there is no chemical bonding between the adsorbent and the adsorbate. Thus, we can also say that physical adsorption occurs when a gas accumulates on the surface of a solid by van der Waals forces without the formation of a chemical bond between the adsorbate and the adsorbent. Now let us discuss chemical adsorption. Chemical adsorption or chemisorption is defined as the phenomenon that occurs when gas molecules or atoms are held to the surface of a solid by chemical bonds. In the example of dihydrogen and platinum, on increasing the temperature, the adsorbed dihydrogen molecules on the surface of platinum dissociate into hydrogen atoms. These hydrogen atoms are held strongly by platinum through chemical bonds. The chemical bond can be ionic or covalent in nature. In some cases, both physical and chemical adsorption may take place at the same time, and it may not be possible to identify the types of adsorption. The basic characteristics of adsorption depend on the specificity of the adsorbent, nature of the adsorbate, reversibility of the process, enthalpy of adsorption, activation energy, layers of adsorption, and surface area of the adsorbent. Let us discuss how each of these characteristics affects physical and chemical adsorption. In physical adsorption, the surface of the solid or the adsorbent has no specific preference for any type of gas molecules or the adsorbate, because the van der Waals forces that act on the adsorbent and the adsorbate are universal. However, chemical adsorption is highly specific and will occur only when an ionic or covalent bonding is possible between the adsorbent and the adsorbate. Therefore, we can infer that while physical adsorption is not specific in nature, chemical adsorption is highly specific. The amount of gas absorbed by the adsorbent also depends on the nature of the gas or the adsorbate. Different gases are absorbed to different extents by the same adsorbent at the same temperature. For example, at 288 Kelvin, 1 gram of charcoal absorbs 380 cc of sulfur dioxide, 16.2 cc of methane, and only 4.5 cc of hydrogen. The volumes of sulfur dioxide, methane, and hydrogen are reported at STP conditions.
It may be seen from the critical temperature values that higher the critical temperature of a gas, the greater is the extent of adsorption. This is because gases that can be easily liquefied have high critical temperatures and are more easily adsorbed. This can be attributed to the fact that the van der Waals forces are strong in the range closer to the critical temperature of that gas. The critical temperature of a gas is defined as the temperature above which the gas cannot be liquefied, however high the pressure applied. It can be seen that the volume of the adsorbed gas increases as the critical temperature increases. The critical temperature of sulfur dioxide is 430 Kelvin, and hence it is adsorbed more on charcoal than methane and hydrogen, which have a critical temperature of 190 and 33 Kelvin respectively. In chemical adsorption, no correlation is seen between the amount of gas absorbed and the critical temperature of the gas, but adsorption depends on the chemical nature of the gas. The greater the reactivity of the adsorbate, the greater is the amount of adsorption. Therefore, we can infer that both physical and chemical adsorption depend on the nature of the adsorbate. Let us now discuss the reversible nature of the process. Like any other equilibrium, adsorption is a process involving true equilibrium, with adsorption on one side and desorption on the other. The two opposite processes include the adsorption of gas molecules on the surface of a solid and desorption of gas molecules from the surface of a solid into the gaseous phase. You know that adsorption is an exothermic process. The equilibrium can be represented as gas, the adsorbate, plus solid. The adsorbent is in equilibrium with the gas adsorbed on the solid plus heat. On applying Le Chatelier's principle, it can be seen that when we increase the pressure or decrease the temperature, the equilibrium shifts forward. That is, adsorption increases. Similarly, when we decrease the pressure or increase the temperature, the equilibrium shifts backwards. That is, adsorption decreases. In other words, desorption takes place. For example, 1 gram of charcoal absorbs about 10 cc of nitrogen at 273 Kelvin, 20 cc at 244 Kelvin, and 45 cc at 195 Kelvin. It is observed that adsorption of nitrogen on charcoal decreases with an increase in the temperature. Thus, we can say that physical adsorption is a reversible process due to the presence of weak van der Waals forces of attraction. However, during chemical adsorption, chemical bonds are formed between the adsorbate and the adsorbent molecules. For example, when oxygen is chemically adsorbed on carbon. To reverse this process, there is a need to free the adsorbed gas. However, the reverse process releases carbon monoxide or carbon dioxide instead of oxygen. Hence, chemical adsorption is irreversible in nature. Therefore, we can conclude
that while physical adsorption is a reversible process, chemical adsorption is irreversible. Next, let us discuss the enthalpy change associated with physical and chemical adsorption. In physical adsorption, since the van der Waals forces of attraction are weak, the heat evolved or the enthalpy of adsorption is very little, around 20 to 40 kilojoules per mole. Chemical adsorption is also an exothermic process. However, in chemical adsorption, surface compounds form, and the forces involved are similar to chemical bonds. Thus, a relatively high amount of heat is evolved, about 80 to 240 kilojoules per mole. Therefore, we see that the enthalpy of physical adsorption is low, whereas the enthalpy of chemical adsorption is very high. Let us now discuss the activation energy required for adsorption. Activation energy is the minimum energy required to convert reactants into the respective products. Physical adsorption involves only weak van der Waals forces and does not involve the formation of surface compounds or any chemical bonds. Therefore, it does not require activation energy. However, as chemical adsorption involves the formation of surface compounds, activation energy is required for the formation of chemical bonds between the adsorbent and the adsorbate. A gas may be physically adsorbed at low temperature, but chemisorbed at high temperature. During the adsorption of hydrogen on nickel at low temperatures, hydrogen is physically adsorbed on nickel. However, at high temperatures, hydrogen gets chemisorbed on the surface of nickel. In other words, an increase in the temperature supplies the necessary activation energy for the formation of surface compounds, and the process is called activated adsorption. We can therefore conclude that physical adsorption requires no appreciable activation energy, while chemical adsorption requires high activation energy. Let us look at the type of molecular layers that are formed during physical and chemical adsorption. Layers of gas molecules are adsorbed one over another by van der Waals forces in physical adsorption. That is why multimolecular layers are formed under high pressure in physical adsorption. In chemical adsorption, a chemical bond is formed with the molecules that come in direct contact with the surface of the adsorbent. Hence, only a unimolecular layer is formed in chemical adsorption. Therefore, multimolecular layers are formed in physical adsorption, but only a unimolecular layer is formed during chemical adsorption. Let us now look at the impact of the surface area of the adsorbent on physical and chemical adsorption. The greater the surface area, the greater is the adsorption. Therefore, substances with porous structures are good adsorbents. Charcoal is a good adsorbent as it has a porous structure. For both physical and chemical adsorption, the extent of adsorption increases with an increase in the surface area of the adsorbent.
Let us first recall some details about adsorption. You already know that at a constant temperature, the adsorption of a gas increases with an increase in pressure. At a low temperature, the physical adsorption of a gas increases rapidly on increasing the pressure. On the other hand, at high temperatures, the increase in adsorption is relatively less. Let us learn more about the effect of pressure on the adsorption of a gas at a particular temperature. Adsorption is basically an equilibrium process. In order to understand the equilibrium process, consider an adsorbent and a gaseous adsorbate in a closed vessel, placed at a particular pressure P. It is observed that due to adsorption, the pressure of the gas decreases initially and becomes constant after some time. This indicates that a state of equilibrium has been attained. Once equilibrium is reached, the rate of adsorption becomes equal to the rate of desorption. The extent of adsorption, that is, the quantity of gas adsorbed per gram of the adsorbent, is expressed as x by m, where x is the mass of the gas adsorbed and m is the mass of the adsorbent. The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with variation in the pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve. This curve, at constant temperature, is called the adsorption isotherm. Freundlich, in 1909, was the first to propose a mathematical relation for an adsorption isotherm. He gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by a unit mass of a solid adsorbent and pressure at a particular temperature. The relation can be expressed as x by m is equal to k multiplied by p to the power 1 by n, where x by m is the amount of gas adsorbed by a unit mass of the adsorbent, n and k are constants, and p is the pressure. This relationship is generally represented in the form of a curve and is known as the Freundlich adsorption isotherm. In this adsorption isotherm, x by m reaches its maximum value at point Ps. In other words, the extent of adsorption is the highest at this point. It can be seen from the curve that even if the pressure is increased beyond Ps, the extent of adsorption remains the same. This is called the saturation state, and Ps is called the saturation pressure. The saturation state is observed when the adsorbate forms a uniform molecular layer on the surface of the adsorbent. If you look at the curve carefully, you will observe that at a low value of equilibrium pressure, part OA of the curve is nearly straight and sloping. Therefore, for part OA of the curve, the relationship between pressure and quantity adsorbed can be represented by the equation x by m is directly proportional to p to the power 1. Observe the curve beyond point B, that is, at a very high pressure. At a very high pressure,
x by m is independent of the value of p. This is represented as x by m is proportional to p raised to the power 0. Let's now look at part AB of the curve. For this part of the curve, x by m lies between p to the power 0 and p to the power 1. In other words, in the intermediate range of pressure, x by m depends upon p raised to the power of 1 by n, where n is a positive integer. At a particular temperature, n and k depend upon the nature of the adsorbate and the adsorbent. Note here that 1 by n has a value between 0 and 1, and the probable range is 0.1 to 0.5. Now, when 1 by n is 0, x by m is constant, and it is in this part of the curve that adsorption is independent of pressure. On the other hand, when 1 by n is equal to 1, x by m is equal to kp, which means that x by m is directly proportional to p. In other words, adsorption varies directly with pressure in this part of the isotherm. If you compare the adsorption isotherms for a gas at different temperatures, you will observe that at a particular pressure, there is a decrease in physical adsorption with an increase in temperature. The Freundlich adsorption isotherm can be validated by taking the logarithm of the isotherm equation. Taking logarithm of both the sides, the equation becomes log x by m equal to log k plus 1 by n log p. This equation corresponds to the equation of a straight line y equal to mx plus c. So, we plot a graph between log x by m and log p. If it is a straight line, then we say that the Freundlich adsorption isotherm is valid. Otherwise not. Note here that the intercept on the y-axis is equal to log k, and the slope of the straight line gives the value 1 by n. It has been observed that adsorption from solutions follows generally the same principles as laid down for the adsorption of gases. Let's verify this with an experiment. Take a litmus solution and add charcoal to it, and then shake it thoroughly. You will observe that after some time the litmus solution turns colorless. This is because the dye of the litmus solution is adsorbed by the charcoal. Similarly, when activated charcoal is added to a solution of acetic acid in water, part of the acetic acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of acetic acid in the solution decreases. The amount of acetic acid adsorbed per gram of charcoal depends upon the surface area of the adsorbent, the temperature of the solution, adsorbate concentration in the solution, the nature of the adsorbate and the adsorbent. Though the exact mechanism of adsorption from a solution is not known, some important observations have been made for adsorption in solution.
Temperature plays a major role in determining the extent of adsorption. As the temperature increases, the extent of adsorption decreases. Secondly, the extent of adsorption increases with an increase in the surface area of the adsorbent. Charcoal, because of its highly porous nature, provides a large surface area, and hence is the most preferred adsorbent in industry and pharmacy. Thirdly, as the concentration of the solute, that is, the adsorbate, increases in the solution, the extent of adsorption increases. Lastly, the nature of the adsorbate and the adsorbent governs the extent of adsorption. That is, the nature of the bonding between the adsorbate and the adsorbent depends upon the species involved. Variation in the extent of adsorption with the concentration of the solute is usually represented by the Freundlich adsorption isotherm. The equation can be represented as x by m is equal to k multiplied by c to the power 1 by n, where x by m is the amount of solute adsorbed by a unit mass of the adsorbent, and c is the equilibrium concentration when absorption is complete. Taking logarithm of this equation, we get log x by m is equal to log k plus 1 by n of log c. This equation also corresponds to the equation of a straight line, y equal to mx plus c. If the graph between log x by m and log c is a straight line, then we say that the Freundlich adsorption isotherm for solutions is valid. The Freundlich adsorption isotherm for solutions can be tested experimentally too. Let us take the example of the adsorption of acetic acid on charcoal again. Take equal volumes of acetic acid of different molar concentrations in different flasks and add an equal amount of charcoal to each flask. Shake the contents in the flasks and keep for some time. The final concentration of acetic acid is determined by titrating the resulting solution against a standard solution of sodium hydroxide. From the difference in the initial and final concentrations, the value of x, the amount adsorbed, can be calculated. The results obtained from this experiment also support the hypothesis that the extent of adsorption increases with an increase in the concentration of the solute. The validity of the Freundlich adsorption isotherm can therefore be established.